Hello, student. Yes. Last day, we are going through conic section, and in conic section, we got few concept on circle. Hope you could go through and understood. Today, we will induct something more on it. Okay. See, Okay, sir. last day we got equation of the circle and number of tangents, common tangent. These were taught. Today, we will go through condition of tangency. Means a straight line is touching a circle. Means will it always touch or sometimes cut, or sometimes it will never meet the circle at all. So that we will decide. Condition of tangency. Condition of tangency of the line y is equal to mx plus c to the circle x square plus y square is equal to r square. Okay. Now, to get this condition, we have to find one quadratic equation using this circle and this linear form, linear equation. How to make that quadratic? कैसे होगा? ये जो y का वैल्यू है, इसको उठा के यहाँ पे पुट करना पड़ेगा. अगर पुट करो तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x ये फॉर्म में आएगा. सो यू ऑब्जर्व x square, in place of y I will place this y. So once you get that, you have to open it. How to open? Use a plus b whole square. A square, a square, and bring r square in left hand side. So from these two, you can take x square common. Okay. So this equation is known to you. क्लास 10 में हो गया था. ax square, ax square bx plus c. Okay, do you remember that? Yes, sir. Okay. Now, see, there is a circle x square plus y square r square, and there is a line. Now, circle meets the line meets the circle at 2 points. It means what? It means the x component of two intersecting points exist. Means suppose there is x1 y1 and x2 y2. So how many, कितना x का वैल्यू है यहाँ पे? 2 वैल्यू है कि नहीं? x का 2 वैल्यू है. एक है x1 और एक है x2. ये सर नो X2. ना. अगर Yes, sir. x का 2 वैल्यू है, तब
ये दो वैल्यू लेके कौन इक्वेशन मिलेगा? क्लास 10 में किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन. So once you get Yes, sir. two roots, that will form a quadratic equation. So this line meets the circle at 2 point, means these 2 points with this circle and line form a quadratic equation. Now this is a chord clearly visible. Now chord will become Yes, sir. tangent. When chord will become tangent? You are taught in quadratic equation, if discriminant is 0, then two roots will become one root. Yes or no? Yes, sir. Then जो कट कर रहा था सर्किल को टच करेगा. सो टचिंग और टेंजेंसी का कंडीशन क्या है? सो टू बी टेंजेंट, discriminant equal to 0. What is discriminant? डिस्क्रिमिनेंट क्या है बोलो? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. डिस्क्रिमिनेंट क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac है कि नहीं? हेलो हेलो. Okay, once you get discriminant 0, what is meant by discriminant? B square minus 4ac. So this chord will become tangent if discriminant becomes 0. Now once you get discriminant 0, you understood. देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस ये लाइन सर्कल को दो पॉइंट में कट करेगा. तो टच कब करेगा? जब 2.1 पॉइंट हो जाएगा. 2.1 पॉइंट हो जाएगा मींस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट सेम हो जाएगा. दो रूट सेम का Okay, sir. जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा. है कि नहीं? हाँ, sir. गुड. सो टू बी टेंजेंट डिस्क्रिमिनेंट 0. व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? b square minus 4ac. You compare this with ax square plus bx plus c. So once you get that result, you simplify. See, 4 m square c square minus 4, you open this 1 into c square is c square minus r square plus m square c square minus m square r square is equal to 0. ठीक है? नाउ इसमें Yes, sir. कॉमन पार्ट क्या है? 4. तो 4 को कॉमन लेके राइट हैंड साइड का 0 के साथ कैंसिल करो तो क्या रहेगा? Okay. हाँ, बचेगा क्या? देखो इस ये ब्रैकेट को भी रिमूव करना पड़ेगा. सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आर स्क्वायर. नाउ I can cancel this. So what is the condition? We are in the verge of getting the condition. C square is equal to r square plus m square r square. So c square, take r square common, 1 plus m square. So c is equal to plus minus r root over of 1 plus m square. Okay. So
y is equal to mx plus c will touch this circle if that condition holds. Understand? Yes, sir. Okay. Now you examine. Hope it is clear to you. Yes, Suppose sir. one Please. equation is given, x square plus y square is equal to 16 and y is equal to 3x plus 4y is equal to 5. The question is, does the line touch the circle? So this is the formula we have got, and we are examining directly whether a given line touches the circle or not. See, पहले ये जो y is equal to mx plus c, ये स्लोप फॉर्म में ये स्ट्रेट लाइन को लाना होगा. यू हैव टू कन्वर्ट Okay, दिस sir. लिनियर जो फॉर्म है ना, इसको स्लोप फॉर्म में लाना पड़ेगा. कैसे? ये 4y minus 3x plus 5. I have to bring that form. Why? Okay. Yes or no? Yes, sir. ना बोलो इसका स्लोप क्या है, ये लाइन का स्लोप क्या है? -3/4. वेरी गुड. तो m derived -3/4. Now I will put as a c clearly visible. C is 5/4. C 5/4. What is the radius of the circle? Circle x square plus y square is equal to 4 square. What is the radius of the circle? R is 4. Now you put all these derived value in this condition. If the condition is satisfied somehow, then we can say that this line is going to touch the circle. See, C is what? C is 5/4. Now what about R? Root 1 plus m square. R root 1 plus m square. What about that value? R is what? R is 4. 4. Yes, put there. M is what? -3/4 whole square. Then we have nothing but to take the LCM after simplifying. 9/16, 25/4. So 25/16, sorry. Now 4 into 5/4. Cancel 5. So what we have observed, C's value is 5/4, but this expression's value is 5. So here C not equal to R root 1 plus m square. Therefore, the line is not the tangent
to the circle. Understand? Yes, sir. Had it been equal, then we would have called it is the Tangent. tangent. But here it is not. Just see at a glance, note down. Noted, sir. Okay. Now we will find the point of contact. We have come to know the equation of the condition of tangency. Now point of contact. So till now what we have got? We have got a circle, x square plus y square is equal to r square, and y is equal to mx plus c will touch the circle if c is equal to plus minus root 1 plus m square. So this is the condition of tangency. Okay. Now you can ask me, तो हमको पूछ सकते हो ये प्लस माइनस का मतलब क्या है? जो तुम क्लास 10 में यूक्लिड जियोमेट्री में थ्योरम किया है, से फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट टू ए सर्कल, है कि नहीं? Yes, sir. So that's why this represents the condition of two tangent. Okay, therefore equation of tangents, now not singular, equation of tangents y is equal to mx plus c. C is plus minus. Plus minus means from external point we can draw two tangent to the circle. This is the equation of the tangent. You can ask me कि ये इक्वेशन देख के पता चलेगा कि ये एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं? यस. एम का वैल्यू क्या है? बोलो, एम का हाईएस्ट वैल्यू क्या है? एम का हाईएस्ट पावर क्या है? 1, 1 plus m square. 2. 2. 2 means m से क्वाड्रेटिक बनेगा. सो इसका दो वैल्यू होगा, एक m1 एक m2. ठीक है. जब m का दो वैल्यू होगा, दो स्लोप, दैट मींस एक पॉइंट से दो स्ट्रेट लाइन वी कैन ड्रॉ. ठीक है, समझ गया? Yes, sir. गुड. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी मिल गया. नाउ कहां टच करेगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमको निकलना है. हमको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकलना है. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकलने के लिए फिर प्रीवियस बोर्ड में जाना पड़ेगा. ये जो इक्वेशन, इसको हम लेवलिंग करता है 1 से. दैट इक्वेशन टू बी रिकॉल्ड अगेन, यू राइट फ्रॉम equation 1 we get what we get? Ax square 1 plus m square ax square plus bx 2mcx plus c.
This is the equation few minutes back we got. याद है तो? हाँ सर। Now C का जो वैल्यू मिला, ये C का जो वैल्यू, let's just drag it and put it here. You pluck, यहां से उठा के यहां पे पुट करो. The question is प्लस माइनस दोनों. ओके सर। हाँ, दोनों नहीं, any one, either plus or minus you can opt. I am opting plus. You put 1 plus m square x square 2m. C के जगह में हम ये पुट कर रहा हूं r रूट 1 plus m square into x plus c square नाउ इसको हम परफेक्ट स्क्वायर का तरीका से लिख सकता है. क्यों? सपोज जो परफेक्ट स्क्वायर देखने में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सपोज ए देखने में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट कैन यू राइट इट इन परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म? यस, रूट यस ए होल स्क्वायर है कि नहीं? हाँ सर। So 1 plus m squared that can be written as root m square x whole square plus 2 root 1 plus m square x into mr. Remove this bracket. R square m square r square minus r square. तो जो तुमको मिला, whatever we have got, that is reminding us what? The childhood's formula of a plus b whole square. याद है तो? यस सर। So a plus b whole square. तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर 0 हो गया तो ये भी 0 होगा, बिकॉज वी नो a square is equal to 0 implies a is equal to 0. So यहां से x का वैल्यू निकल गया. ठीक है? हेलो, समझ गया तो? यस सर। देखो ये हाँ एकदम सर। जेई का थ्योरी, बट क्लास 7-8 का जो कॉन्सेप्ट से और ये क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट से आ रहा है. तो जो हम ओके सर। छोटा उम्र में किया उसका वाइडर एप्लीकेशन इज द जेई लेवल. सो जो पॉइंट में ये टच कर रहा है उसका एक्स कंपोनेंट मिला, 2 पॉइंट में टच कर रहा है, 2 पॉइंट से एक पॉइंट का एक्स कंपोनेंट मिला. तो जब एक्स मिल जाएगा तो हम यहाँ पे पुट करके वाई भी मिल जाएगा. तो हम यहाँ पे क्या लिया था? c इज इक्वल टू, हम यहाँ पे प्लस आर ये लिया था. तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या था? y इज इक्वल टू mx प्लस c. व्हाट इज x? माइनस mr रूट 1 प्लस m स्क्वायर. और c का वैल्यू क्या है जो हम अभी लिया? ये प्लस माइनस से प्लस को चूज किया था. तुम अगर चाहो तो माइनस भी चूज कर सकते हो. नाउ हमको ये एलसीएम करने का अलावा और कोई रास्ता नहीं है. वी हैव नथिंग बट टू टेक द एलसीएम. एलसीएम कर लो.
Open the bracket. M square R will be dropped. So this is R by 1 plus M square. Okay. Okay, sir. So ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमको मिल गया, क्या? माइनस एम आर बाई रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, कॉमा आर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। और तो इसका क्या होगा? इसका जस्ट ऑपोजिट, इसका एक्स कंपोनेंट माइनस था, बिकॉज अभी हम प्लस माइनस को से प्लस लेके ये वैल्यू मिला। तो इफ आई कंसीडर माइनस नाउ, तो एक्स का कंपोनेंट प्लस आएगा, वाई का कंपोनेंट माइनस आएगा। Okay, sir. Put it. ठीक है। अगर कोई कॉन्सेप्शन में कोई प्रॉब्लम हो जाए, डोंट हेजिटेट टू आस्क। हाँ, Okay, sir. so this is the point of contact. So in combining two, we can write, therefore if y is equal to mx plus c is a tangent to x square plus y square is equal to r square, then c will be plus minus root 1 plus m square that is the condition of tangency, जो तुमको याद रखना होगा। ये derivation for the what I can say self enrichment. Okay, okay, sir. The condition of tangency and point of contact जो हमको मिला। देखो ये एक्स कंपोनेंट सेम है, बट एक प्लस होगा, एक माइनस होगा। माइनस प्लस एम आर बाई रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, और ये प्लस माइनस okay. So this is the condition of tangency and this is the point of contact. So this thing we have to keep in our mind. Okay, sir. And this is the equation of tangent. So that is the total theory of tangency of slope form. Here it is slope. And point of Yes, sir. contact and equation of the tangent. Now tangent can be formed by other way also, by calculus, by differentiation, because slope of the line is nothing but differentiation. Okay. Okay, sir. Just wait. Now I'm skipping to the next page. Now equation of tangent, previously we got equation of the tangent of a circle by slope form. Right now equation of a tangent to the circle x square plus y square is equal to r square at any point x1 y1. Suppose there is a circle and there is a tangent at which point x1 y1. Okay.
So x1, y1, at this point x1, y1, we have to draw one tangent, and that tangent's equation we have to find. Now, Okay, sir. x1, y1 lies on x square plus y square is equal to r square. It does mean what? x1, y1 lies on the line. Means it will satisfy the equation. x1 square plus y1 square is equal to r square. There is a known value. Still, we don't know whether that value has some role or not. Now, if you get the circle of this form, then center must be 0, 0. So, join it. Join the point of contact to the center of the circle. Okay? ठीक है? Yes, sir. अच्छा बोलो, ये एंगल क्या होगा? क्लास 10 में क्या है? 90 degree. 90 degree, because 90 degree होगा. at point of contact, radius and tangent are 90 degree to each other. Now, this is O, this is P. Slope of radius OP is equal to slope का जो फॉर्म था that is M. Now, ये तो 90 डिग्री है, तो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? M M1 minus 1. Let M1 be the slope of the tangent, as radius is perpendicular to tangent at point of contact. तब क्या होगा? M M1 minus 1 होगा, है कि नहीं? हाँ सर. तो M1 क्या है? minus 1 by M. M क्या है? minus y1 by x1. x1 will go up. So this is the slope of the tangent. तो tangent तो खुद ही एक लाइन है. तो लाइन का इक्वेशन क्या है? जो एक पॉइंट से पास कर रहा है, स्लोप भी दे दिया, y minus y1 m x minus x1, है कि नहीं? हाँ सर. So equation of the tangent at x1 y1 to the circle is y minus y1 m1 x minus x1. What is m1? This thing m1. Cross multiply. So what is x1 square plus y1 square? From 1 you drag the value. Put here.
Therefore, equation of the tangent at x1, y1. Okay. Okay, sir. So, if you get x square plus y square is equal to 25, then equation of tangent at say 2, 3 will be what? X into 2 plus y into 3. 3 is equal to 25, 2x plus 3y, 25. Okay. Okay, sir. Now you can ask me that always this circle will be given where center is at origin. If any other form of circle is given, then what will be the equation of the tangent? Suppose then partial derivative will be required. Partial derivative is not yet taught. So just learn the formula. If say x1 y1 lies on the circle then equation of tangent at x1 y1 is the first part is same, x1 plus y1 plus g x plus x1 f y plus y1 plus c. This is the equation of the tangent if this general equation is given, equation of the tangent to the circle. Okay. Okay, sir. Hope you have understood. Yes, sir. Understood. Okay. Now see, from here we have come to know this is the equation of the tangent and this is the condition of tangency. So suppose there is a circle like this, x square plus y square is equal to r square. From external point we can dot two tangent and we have come to know equation of tangents y is equal to mx plus minus r root 1 plus m square. Now, if the pair of tangents meet each other 90-degree angle outside the circle, then locus of the point of intersection. So the topic is what? If pair of tangents
of above circle meet each other externally at 90-degree angle at 90-degree angle, then find the locus of point of intersection of two perpendicular tangents. Means it, so many uh, you know so many lines I have to spend, but actually it is so simple. जो दो टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकता है, वो अगर 90 डिग्री एंगल बनाता है बीच में, तब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का पाथ और लोकस क्या है. मींस ये एक स्ट्रेट लाइन का ऊपर है, सर्कल का ऊपर है, पैराबोला ऊपर के है, ऊपर है, और किसी का ऊपर है, वो हमको जांच करना है. ठीक है. ओके तो हम ये जो पॉइंट है, हम इसको एच के ले रहा हूं. आई एम कंसिडरिंग द पॉइंट इज एच के. तो ओके एच के अगर ये लाइन का ऊपर रहेगा तो एच के सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को. तो सेटिस्फाई का मतलब क्या है? एस के जगह में एच, वाई के जगह में क्या आएगा, है कि नहीं? हाँ सर तो पुट करो के एम एच तो ये जो एम एच पार्ट है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ड्रैग करके लेके आओ. नाउ हमको तो ये रूट हटाना है. आई हैव टू रिमूव दिस रूट. कैसे? बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड. यस सर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे भी प्लस माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगा. ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एम आ रहा है. सब टर्म को एक साइड में लेके आओ. 2k(h(m) प्लस m स्क्वायर h स्क्वायर r स्क्वायर इंटू 1 r स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर. तो ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक, वी आर गेटिंग द सेम्बलेंस ऑफ ए क्वाड्रेटिक. कैसा क्वाड्रेटिक? किससे बनेगा? व्हाट विल बी द वेरिएबल ऑफ दैट? m. बिकॉज m स्लोप है यहाँ पे. m स्क्वायर h स्क्वायर माइनस r स्क्वायर माइनस 2k(h)m plus k square r square is equal to 0. So at last we have got a quadratic equation in m. Okay. Now m, ओके अगर quadratic m है, m का दो वैल्यू मिलेगा, like alpha beta m1 m2. So it has two roots. m1 ये लाइन का स्लोप होगा, m2 होगा ये लाइन का स्लोप. बोलो
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस 0 इज इक्वल टू 0 में अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? क्लास 10 में क्या था? माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा सी बाई ए। सी बाई ए. So here m1 m2 alpha beta c by a. What is c? c by a. ओके. ओके सर। बोलो ये अगर ये एंगल 90 डिग्री हो जाए, इफ दिस एंगल इज 90 डिग्री, m1 इंटू m2 क्या होगा? व्हाट विल बी m1 इंटू m2? ए स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर बाई एच स्क्वेयर नो, माइनस आर स्क्वेयर। in straight line I hope you are taught that if, or if you are not taught, you go through my class in straight line. See, if two lines are perpendicular to each other, then their slopes product is what? -1. Yes or no? यस सर, यस सर। So this product will give you -1. So cross multiply. Cross multiply. -1 into h square minus h square minus minus plus is equal to k square minus r square. So is equal to 2r square. So hk ka h और k how are related? h square plus k square 2r square. Yes or no? यस सर। तो h और k का लोकस क्या होगा? h के जगह में हम x पुट करूंगा. जैसे देखो, सपोज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 5. तो लोकस ऑफ 1 2 कैसे होगा? 1 के जगह में x, 2 के जगह में y पुट करूंगा, है कि नहीं? हाँ सर। तो ये एक सर्कल हो जाएगा. मीन्स 1 2 ये सर्कल का ऊपर लाई कर रहा है. इसका लोकस और पथ, रास्ता सब सर्कुलर है. तो where does hk lie? Therefore locus of hk is x square plus y square is equal to 2r square. Yes or no? यस सर। तो ये भी तो सर्कल का इक्वेशन है. तो अगर ये भी सर्कल का इक्वेशन हो गया, तो ये जो पॉइंट एक सर्कल का ऊपर ही रहेगा. तुम यू कैन आस्क मी, say okay, why did you take the circle in this way? You see that the original circle whose center is 0 0, and this circle on which this point lies also center 0 0. So one circle lies inside the other. Now the question is, which is bigger circle? देखो इसका रेडियस क्या है? √2r होल स्क्वायर, है कि नहीं? यस सर। मीन्स अगर ये लेंथ होगा √2 और ये लेंथ होगा ओनली √2r, ये ओनली r. सो ये जो सर्कल मीन्स जो परपेंडिकुलर टेंजेंट जो पॉइंट में मिलेगा, उससे जो सर्कल मिलेगा, वो सर्कल ओरिजिनल सर्कल से ज्यादा है. और as they both of them have same center, so they are called concentric circle. So ये सर्कल का अंदर में पूरा ये सर्कल जाएगा. ठीक है? ओके सर। So this circle is called director circle. Understand? यस सर, गॉट इट। So if
pair of tangents in the above circle meet each other externally at 90 degree, then find the locus of the intersection of two perpendicular tangents. Therefore, locus of intersection of two perpendicular tangents of the circle x square plus y square is equal to r square is directed circle x square plus y square root 2r whole square. Okay, Okay, sir. that is called directed circle. Now, based on this, I am telling you to solve one problem, so simple problem. दो जिसको ये थ्योरी ग्रिप में आ गया वो ये सम करेगा. Have you gone through this? Have you gone through? Yes, yes, sir. It is all noted. Okay. Can I skip to the next page? Next page जा सकते हैं? Yes, sir. Sure, you can skip to the next Okay. page. लिख लो. होने के बाद हमको बोलो. Okay, okay. Yes, sir. It's done. हो गया तो? हाँ, sir. ठीक है. See. A pair of tangents are drawn at 2 points on the circle x square plus y square is equal to 25 meets another circle x square plus y square is equal to 50 at 1 point. So a pair of tangents are drawn at 2 points. 2 points, let us take level it P and Q on the circle. This meets another circle x square plus y square is equal to 50 at R. Then angle PRQ, option A 30 degree, option B 45 degree, option C 90 degree, option D none of these. Just you observe and tell me. Answer? ये था. हो गया? 1 minute, sir. ट्राई करो. Yes, sir. Yes. This sum has some relation to the previous sum. Okay, sir.
बोलो, दोनों सर्कल का सेंटर क्या है? 0 0। बोथ, सो दे आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो विच सर्कल, कौन सर्कल छोटा है, कौन सर्कल ज्यादा बड़ा है? ये छोटा, ये दिस इज बिगर, यस और नो? हाँ सर, 90 डिग्री होगा सर इसका आंसर। 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री होगा? देखो, ये जो छोटा सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका रेडियस है 5 स्क्वायर। और ये जो बड़ा सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 50, इसका रेडियस होगा 5√2 होल स्क्वायर। दैट मीन्स यस एक्स सर। स्क्वायर √2 आर होल स्क्वायर, यस और नो? हाँ सर। So this is the director circle of the first circle. That means if this circle is denoted by this, and that circle is this. Now at 2 points P and Q, tangents are drawn, and point of intersection is 90 degree. That is the condition 90 of डिग्री। director circle. Understand? यस सर, got it. So those who can consume the knowledge of director circle, seeing this type of sum in 1 minute, they will respond. Okay? Yes sir. Okay. Now, director circle we have got. Locus of the midpoint, एक दो चीज अभी अर्जेंट है। एक है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इक्वेशन ऑफ chord of contact of a circle. What is called chord of contact? Suppose one circle is provided whose equation is x square plus y square is equal to r square. Okay. Okay sir. Now one chord is drawn, and actually not one chord, from external point two tangents are drawn. Two tangents point of contact are joined by a line. Understand? Yes sir. So the line which joins the point of contact of two pair of tangents is called chord of contact. Why? Oh yes sir. At a time, this line makes a chord as well as joining the point of contact. Okay. So this line is Okay. chord of contact. So this is A, B. I am letting this thing x1, y1. So equation of chord of contact of a circle drawn from external point x1, y1. How to draw? See, let this point is x2, y2, and this point is x3, y3. Now, at x2, y2,
that is point A. Equation of tangent x2 plus y2 is equal to r square. Okay, Okay. जो हम few minutes back किया था. And at B, that is x3 y3, equation of tangent x x3 y y3 r square. So both the tangent meet where? Externally at x1 y1. Yes or no? Yes, sir. ये दोनों टेंजेंट सर्कल का बाहर x1 y1 पॉइंट में मीट कर रहा है. तो what conclusion I can draw? That x1 y1 will satisfy this equation as well as this equation. So if I level it by 1 and level it by 2, then I can say, therefore, as line 1 and line 2 meets externally at x1 y1, therefore yes or no? Yes, sir. But in other way I can write. Other way, Yes. in other way, we can say x2 y2 and x3 y3 lie on x1 y1 is equal to r square. That is the equation of chord of contact. Equation of chord of contact with respect to a point x1 y1 lies outside the circle. Okay. Hello. Yes, sir. So taking clue from this, suppose you have got x square plus y square is equal to 25. Now find the equation of chord of contact with respect to a point seven comma 6.
Now, if in this type of sum, you have to examine whether the point lies outside the circle or not. Why? Because we have to draw a pair of tangent. So, had this not been lie outside the circle, then I can't draw the pair of tangent. अगर ये टेंजेंट का सर्कल का ऊपर ही लाई करेगा तो उससे तो कोई टेंजेंट नहीं आएगा, और इनसाइड अगर है सर्कल का अंदर है पॉइंट, तब तो टेंजेंट का कोई सॉल्व ही नहीं होगा, है कि नहीं? हाँ सर। तो हमको वो चेक करना है कि ये पॉइंट सर्कल का बाहर मीट करेगा और अंदर। देखो, सो वी विल डू व्हाट, I will put 7 and 6 on this equation. 7 square plus 6 square minus 25. 49 plus 36. 85, 60. Obviously greater than 0. Therefore, 7, 6 lies outside the circle. Yes or no? Yes sir. So, chord of contact, we have had the formula. Therefore, chord of contact with respect to seven comma 6 is x into 7 plus y into 6 is equal to 25. So 7x plus 6y is equal to 25. Okay. 25. Yes sir, got it. Now, till now, we have gone through theoretical jugglery. For JEE main or advanced level, few theories still left. Inch by inch theories are there, but don't get nervous. See, till now, Okay sir. whatever is taught, does it seem to you tough? Tough laga? Is it that much of tough? No sir, it's moderate. No. But see, once the class get off, you have to revise the theory. Huh? Because if you had Okay sir. knowledge in theory, in any type of sum you can defend. Understand? Yes sir, got it. Let's do. Till now, jugglery of theory is done. Let us do one or two sums from JEE level. Okay sir. Okay, just wait. I'm skipping to the next page. If the circles x plus 1 whole square, y plus 2 whole square is equal to r square, and x square plus y square minus 4x minus 6y plus 4 is equal to 0. Intersect at exactly 2 points. Okay. Okay sir. Then option A,
5 less than r less than 9. Then 0 less than r less than 7. 3 less than r less than 7. And half less than r less than 7. Okay. Now, if this sum is given to me, or if I have become the student, so from that point of view, how can I start? Last day we did two things. You see, here actually two circles are intersecting each other. Yes or no? Hello? Yes, sir. Two circles intersecting each other. First circle center is -1, -2, and second circle center is, if you see, you compare it, x square minus 4x plus 4. You borrow 1 4, then y square minus 6y plus 6y. No, that is 4y. Some mistake of mine. X square, just rectify. 4y, so I need 1 4. So I have taken extra 8. Plus 4 already been there. So plus you add to balance. So that will give us x minus 2 whole square, y minus 2 whole square is equal to 4, x minus 2 whole square, y minus 2 whole square is equal to 2 square. So say this center is 2, 2. Yes or no? Hello? Yes, sir. So फर्स्ट सर्कल का सेंटर है, देखो यहाँ पे इसको कंपेयर करो जनरल इक्वेशन से, x माइनस अल्फा होल स्क्वायर y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. अल्फा क्या है? माइनस अल्फा अगर 1 है जाए तो अल्फा -1, बीटा -2. तो दोनों सर्कल का सेंटर हमको मिल गया है कि ना? ओके. Yes, sir. लास्ट डे जो हम किया था, लास्ट डे जो हम किया था, अगर दो सर्कल टच कर रहा है, एक इसका रेडियस r1, इसका रेडियस r2, सेंटर c1, ये एक्सटर्नली टच करने का कंडीशन क्या था? c1 c2 का जो डिस्टेंस r1 प्लस r2 के साथ इक्वल है कि नहीं? हाँ सर. बट अभी थोड़ा चेंज आएगा. क्या चेंज? दे आर इंटरसेक्टिंग. सो यहाँ पे C1 और C2 का जो डिस्टेंस यहाँ पे टच कर रहा है, कट नहीं. हाँ, देखो यहाँ पे R1 प्लस R2 अगर इसका डिस्टेंस हो जाए तब टच करेगा, अगर नहीं हो जाए, थोड़ा अंदर आ जाए, तब क्या होगा? R1 प्लस R2 का डिस्टेंस C1 C2 से ज्यादा होगा. ठीक है? हाँ हाँ सर. हाँ देखो, सर, ठीक. देखो R1 R2 तो सेम ही रहेगा. एक्चुअली जब हाँ हाँ सर. जब टच करेगा, जब टच होगा, तब C1 C2 का डिस्टेंस R1 प्लस R2 से सेम होगा. अगर जब कट करेगा तब R1 और R2 तो सेम रहेगा, बट C1 C2 का डिस्टेंस थोड़ा रिड्यूस्ड हो गया है कि नहीं?
हाँ सर। तो C1 C2 यहाँ पे C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2 होगा, है कि नहीं? हाँ सर। अच्छा, जब इंटरनली टच करेगा, इफ दे टच ईच अदर इंटरनली, तब हम क्या किया था? C1 C2 R1 माइनस R2 था। बट यहाँ पे क्या होगा? वो ग्रेटर देन R1 माइनस R2 हो जाएगा। क्यों? इंटरनली टच नहीं कर रहा है ये। ऐसा है कि देखो, ये है R1, ये है R1, ये है R2, ये है C1 C2। तो ये था एक सर्कल, बट यहाँ पे तो इंटरनली टच हो रहा है, इसीलिए C1 C2 R1 माइनस R2 यहाँ पे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो R1 और R2 तो सेम रहेगा, बट C1 C2 का बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है। नाउ यहाँ पे R1 क्या है? R1 है R। C1 C2 का डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला से। C1 C2 क्या होगा? 2 माइनस ऑफ -1 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ -2 होल स्क्वायर, सो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5। सो C1 C2 होगा 5। ठीक है। ओके सर। R1 मीन्स एक R है क्या? R, और अनदर रेडियस क्या है? 2, R+2। यहाँ पे R-2। सो ये दोनों कंडीशन से दो रिजल्ट आएगा। अगर हम ये ले लू 5 bring 2 in this side, so R 3 लेस देन R हो गया, 3 लेस देन R। यहाँ पे मॉड्यूलस है, R 2 से ज्यादा है कि छोटा है नहीं जानता, दोनों को लेना पड़ेगा, प्लस माइनस। अगर R-2 है, प्लस हम इफ आई टेक प्लस वैल्यू, R 7 से छोटा होगा। अगर R नेगेटिव हो जाए, वही R-2, तो क्या होगा? R ग्रेटर देन -3 होगा, हम तो माइनस नहीं लूंगा। सो इस दोनों को कंबाइन करो, 3 R से छोटा, R 7 से छोटा। ठीक है। ये देखो 3, हाँ, ग्रैंडसन, फादर फादर से छोटा, फादर ग्रैंडफादर से छोटा। तो कैसे कंबाइन करोगे? 3 लेस देन R लेस देन 7। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन सी। JEE 2024, recent past. It came in recent past. ओके सर। With basic conception, easily we can do this. Okay? ठीक है। हाँ सर ठीक है। और एक सम, लेट अस डू अनदर सम। देखने में थोड़ा टफ, बट एकदम ही टफ नहीं, लाइक ऐसा। ये तो देखने में टफ था, बट देखो, अगर तुमको ये माने टेंजेंट का कॉन्सेप्शन है अच्छे से, इफ two circle touch each other internally or externally, then easily you can defend this type of sum. See another sum. Let's do the lines 3x minus 4y is equal to 7 and
2x minus 3y is equal to 5. Sorry. Two x minus 3y is equal to 5 are diameters of a circle. Whose area is 154 square unit. 154 square unit. Its equation is, it came in J. Okay. बोलो डायमीटर का इक्वेशन दे दिया हुआ है. Now if I solve them, what point I will get? Sir, here the lines हाँ बोलो. दो डायमीटर का दिया है. हाँ दो डायमीटर का. ये एक डायमीटर. सर जी. Where do they meet? At center. Yes or no? At center. Yes. Yes, sir. So solve it. 3x minus 4y minus 7 is equal to 0. 2x minus 3y minus 5 is equal to 0. X, y, 1. So by cross multiply method we are solving 20 minus 21, then minus 15 plus 14 minus 9 plus 8. So x by 1, y by 1, 1 by minus 1. xy minus 1 comma 1. Center. Yes or no? Yes, sir. Now how to find the radius? You recall the formula of mensuration. Area is given 154. So pi r square is 154. Yes or no? Yes, sir. So what is pi? 22 by 7 r square. Can it be cancelled? Yes. 7. R square is 7 square. We have got center and radius both. So equation of circle, x minus alpha whole square, y minus beta whole square is equal to r square. Alpha is what? Minus 1. Beta is what? Minus 1 plus is equal to 7 square. X plus 1 square, y plus 1 square is equal to 7 square. Is it that much of tough? No, sir. No. Joint question, JEE level question of yesteryears. So what we have seen, jugglery of theory, little bit tough, sums so lenient. So that is the positivity of this exam. And if you sit for the exam with that much of courage and little bit of daring approach, not that bookish knowledge, daring approach, I am sure you can crack this. But if you Okay. get if you get overwhelmed by the exam, okay, tensed, then obviously it will affect. You see, with basic knowledge we could solve. But see, if you get tensed, or if you are somehow overwhelmed by the intensity of the exam, then somehow it will affect your
smoothness of thinking. So you just by you study with enjoyment, you release the depth of the subject, and keep on watching our video, and this class hope will help you. Okay, so whatever is taught, I you have understood. If Yes, sir. Understood. carry on, keep it up. Okay, see you in the next class. Okay. Okay, bye. Thank you, sir.